मॉर्निंग और गुड इवनिंग भी कह सकते हैं, लेकिन आज की शुभ शुरुआत कंटिन्यूशन ऑफ पेन मैनेजमेंट। आज के दिन में सर्वाइकल स्पाइन, जिसको हम स्तंभ कहते हैं, उसके बारे में आज क्लिनिकल एग्जामिनेशंस एंड इन्वेस्टिगेशन से हमको क्या क्या पता लगेगा, इसके बारे में निखिल ने बहुत मेहनत की है। वो बात करेगा एंड क्वेश्चन आंसर के समय मैं आपके साथ जुड़ूंगा। वेलकम एवरीबडी। मैं आपसे फिर से कहता हूँ कि अपने मित्रों को भी इसमें जोड़ने के लिए कहिए, क्योंकि ये ज्ञान गंगा कई सालों के अनुभव से और नई टेक्नोलॉजी के साथ में हम लोग कर रहे हैं। तो आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत है यहाँ पे। और ओवर टू दी निखिल गुप्ता, he will continue about today's presentations. निखिल, over to you. Good evening, everyone. So, our today's topic will be I welcome myself, Dr. Nikhil Gupta. Thank you so much, sir, for giving my introduction. And today I will be dealing with two topics related to neck and shoulder. First thing, clinical examination, जिसमें 4 slides होंगे, 4 examinations है. And second thing will be cervical disorders में क्या-क्या radiological findings रहते हैं. So, I'll start sharing the screen now onwards. If there is any questions, you can put your questions in the chat box. And it's already 8:34, so I won't do any delay and start with the presentation. चलो, ओम धन्वंतराय नमः. So this is Manyastambh, our 8th session of 3rd batch, and the heading is clinical examinations and radiology. So clinical examination में हम क्या-क्या देखते हैं? First thing, in the neck का जो curvature रहता है, it is usually lordosis shape. अगर वहां पे lordosis का loss है, तो it is called as kyphosis. Then is posture. आजकल हम ज्यादा टेक्नोलॉजी की वजह से मोबाइल, लैपटॉप और सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हमारा जो कर्वेचर है, जिसे हम लॉर्डोसिस बोलते हैं, देयर इज लॉस ऑफ कर्वेचर एंड बिकॉज ऑफ लॉस इट इज कॉल्ड एज काइफोसिस. सो नेक्स्ट थिंग इज नेक अलाइनमेंट. नेक के अलाइनमेंट में देयर इज लॉस ऑफ लॉर्डोसिस एज आई सेड राइट नाउ. As you can see in this image, what is the normal angle and what is the abnormal angle. Next is if there is any swelling or deformity. Swelling may be of any kind. There may be a lipoma और देयर में भी सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी या बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्वेलिंग रहते हैं जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं अपने फ्यूचर स्लाइड्स में. नेक्स्ट इज इफ देयर इज एनी स्किन चेंजेस, डिस्कलरेशन है, परप्यूरा है और एनी ऑफ दोस स्कार्स है, साइनसेस है, वी नीड टू सी ऑल दोस थिंग्स एट द नेक. एंड यू कैन सी अ पेशेंट का फोटो, देयर इज मसल वेस्टिंग. सो ये सब चीज हम जनरली इंस्पेक्ट करते हैं इन अ पेशेंट coming with neck disorders. See here there is a very beautiful image of 5 symptoms. Usually the patient will come with a complaints of local neck pain or cervicogenic headache, and because of this there may be a myofascial pain जिसमें मसल्स और फेशिया इतने डीप लेवल तक पेन जाते हैं. See, my topic was examination of neck. Examination में as we saw the inspection part, next आता है palpation. Palpation में क्या करते हैं कि पहले टेम्परेचर चेक करते हैं कि यूजुअली इट शुड बी लेस देन 104. एंड इफ देयर इज एनी टेंडरनेस, यूजुअली पेशेंट्स को अगर इफ देयर इज एनी ट्रॉमा और इवन इफ देयर इज नो ट्रॉमा, देयर इज एट सम टाइम्स टेंडरनेस प्रेजेंट.
कहाँ पे? स्पाइनस प्रोसेस में, पैरास्पाइनल मसल्स में, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स में, एंड देयर इज आल्सो मसल स्पाज्म। स्पाज्म क्यों होता है? हाइपरटोनिसिटी की वजह वजह से। नेक्स्ट है इफ देयर इज एनी लिम्फ नोड स्वेलिंग्स, थायराइड ग्लैंड, या इफ देयर इज एनी ट्रैकियल डिपोजिशन, राइट या लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ हो। सो ये सब चीज हमें पैल्पेशन में एग्जामिन करना होता है। Next is the most important thing where we are going to deal is right now. You can see in the image, it is an AI generated image which explains very beautifully range of motion. जब हम अपना पेस आगे करते हैं, that is called as flexion, and when we take it back, it is called as extension. Normal range is till 45 degree you can flex and extend. But agar if there is any loss of angle, you can suspect that there is some cervical disorders. You have to ask the patient to do lateral flexion. हो पाता है कि नहीं हो पाता है? You have to ask the patient to do rotation right and left side laterally. So इसके specific test हम आगे discuss करने वाले हैं. First is cervical distraction test. ये cervical radiculopathy, if there is any nerve root compression. So here there is a video demonstrating, and these videos have been taken from internet sources to give you an clear explanation. 4 एग्जामिनेशन है जिसमें से सर्वाइकल डिस्ट्रैक्शन टेस्ट. आई प्ले द वीडियो. सी, यहाँ पे द पेशेंट इज स्लीपिंग इन अ सुपाइन पोजिशन एंड the doctor is doing a maneuver where he is pulling the cervical by keeping his fingers at the occiput region and pull करके check करे if there is any pain or not. If there is no any pain, then there is no any radiculopathy. But if any pain persists, it is called as radiculopathy, जिसका मतलब होता है nerve root compression. सेकेंड टेस्ट पे जाते हुए, उसका नाम है स्पर्लिंग्स टेस्ट. इसमें द मैन्युअर यूज टू डिटेक्ट इफ देयर इज एनी सर्वाइकल रूट कंप्रेशन. एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस वीडियो रेडिकुलोपैथी. इसमें क्या होता है कि जो न्यूरल फोरामिना होता है, इट गेट्स नैरोड बिकॉज ऑफ कंप्रेशन. सी द एग्जामिनेशन नाउ. ओके, सो लास्ट टाइम इन द एनाटॉमी एज वी हैव डिस्कस्ड, 3 लेयर्स ऑफ मसल होते हैं, सुपरफिशियल, मिडल और डीप. सुपरफिशियल में प्लैटिस्मा मसल होता है और एक स्टर्नोक्लाइडोमास्टोइड मसल होता है. उसमें क्या होता है कि व्हेन यू आस्क द पेशेंट टू tilt laterally and outwards, there will be a stretch in those muscles. And वो muscles में से आपके nerve root imbibe होता है. So if you stretch those muscles, the nerve also get compressed and you have that radiating pain or numbness or tingling, or जैसे बोलते हैं मूंगी आना, जैसे फील होता है पेशेंट्स को. So all these things can be assessed with Sperling's test. Lehermet sign. So this is again we are doing the flexion of neck. And flexion में अगर if the patient is having pain, so the Lehermet sign is positive. Our last test will be Adson's test. इसमें
डॉक्टर राहुल, ओके सॉरी, देयर वाज अ डिस्टर्बेंस. ओके, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी एंड सर्वाइकल माइलोपैथी कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. रेडिकुलोपैथी इज एन acute stage and myelopathy is an advanced stage. कैसे ये दोनों पेशेंट्स के एक्सरेज है यहाँ पे फ्यूचर लेसन्स में. डॉक्टर देव आई विल डिस्कस इन अपकमिंग स्लाइड्स नाउ हियर ओनली इन दिस लेक्चर itself. So I'll start sharing my screen again. Sorry, because of someone speaking, lecture got delayed. So now we'll be starting with case discussion. Sorry, radiology. So the most common clinical cases are encountered in the routine practices, which includes, as you can see, this he's having some neck spasm or neck sprain, which he's trying to do relief by pressing those points. So neck muscle या neck spasm, if अगर there is कोई severe pain हो या neuromuscular symptoms दिखे associated with pain, then MRI is the preferred modality to differentiate muscle spasm. और सीरियस, अगर कोई अंदर सीरियस अंडरलाइन टिश्यू इंजरी होगा तो वो एमआरआई में रूल आउट हो जाएगा. अगर ऐसा कोई सीरियस सिम्टम्स नहीं है और मेडिसिन से ठीक हो जाते तो वेल एंड गुड. दिस इज द मोस्ट फर्स्ट क्लिनिकल कंप्लेंट अ पेशेंट कम्स विद, मसल स्पाज्म इन द नेक. सो 5 Ds, अगर स्पाज्म कब सीरियस और कब सीरियस नहीं है ये जानने के लिए आपको ये 5 D याद करना बहुत ही जरूरी है. फर्स्ट है इफ द पेशेंट इज हैविंग एनी डिजीनेस. दूसरा, अगर पेशेंट को डबल विजन दिखता हो. Third, if the patient falls suddenly. Fourth, if the patient is having any kind of slurred speech. And fifth, if there is any swallowing difficulty. ये सब जो activities है, it is controlled by the cervical nerves. If there is any compression or any radiculopathy या any myelopathy, ये 5Ds is a neurological disorder which needs to be taken care of. ये signs and symptoms को ignore नहीं करना चाहिए. So these are the red flags which every practitioner should know. See, everyone knows the संप्राप्ति की वात प्रकोप के वजह से श्रोत्र अवरोध होता है, शूल होता है और स्तंभ होता है. Second most common clinical case what you will encounter in your clinic is cervical spondylosis. इसमें क्या रहता है कि द एज रिलेटेड, जब आपका वेयर एंड टेयर हो नेक के वर्टिब्रेस के या इंटरवर्टिब्रल डिस्क के, so the patient has the spondylosis. So because of this degeneration and wear and tear, the patient will be having spondylosis, as we can see in this X-ray, this whitish portion. Yes, this whitish portion. It shows that there is wear and tear of this intervertebral disc. Next most encountered case, as Dr. Dev has asked, cervical radiculopathy. See, as I said, you radiculopathy is an acute stage and myelopathy is an advanced stage. कैसे, वो अभी मैं बताता आपको. The cervical spine is compressed, which causes three things: pain, numbness, and tingling. उसके वजह से क्या होता है? The patient will come to your OPD with the complaints of radiating hand pain, because यहाँ पे जो नस दबे हुए हैं उसकी वजह से there is a radiating pain, which is seen in radiculopathy and also in this MRI. It gives a clear picture जहां आपका स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस हो रहा है. The third most common you will see a neck injury patient, जिसको हम whiplash injury बोलते हैं. It is a traumatic condition and see, when I say the terms age degenerative, when I say the term traumatic, when I say the term congenital, when I say the term malignancy, ये कुछ 4-5 क्लासिफिकेशन के अंदर ही सब डिजीजेस आते हैं. तो विप्लैश उसमें से ट्रॉमेटिक कंडीशन में आता है. उसमें क्या होता है, तो पेशेंट को कभी आगे से मार पड़ा हो,
कभी पीछे से मार पड़ा हो, तो देर इज मेनी ट्रीटमेंट्स विच नीड्स टू बी डन. सो आई विल कंप्लीट दिस विप्लैश इंजरी होता क्या है करके. सो इट इज अ नेक इंजरी. जब आपको आगे से मार पड़ा है, जब आपको पीछे सामने से मार पड़ा हो फोर्सफुली और लाइटली, सो आपका फ्लेक, आपका जो नेक है, इट गेट्स फ्लेक्स्ड और हाइपर एक्सटेंडेड. सो ये जो होता है ट्रॉमा, इट इज बिकॉज यूजली सीन इन कार एक्सीडेंट्स, स्पोर्ट्स और एनी काइंड ऑफ फिजिकल अब्यूज. We can see in this image that it is hyperflexed and hyperextended. See, there is two images which shows one normal curvature. As I said, kyphosis. ये left side में जो image है kyphosis, it is a very normal image. But when you can see in the right image, there is a red color line which shows that there is some deformity because of this whiplash injury. सर्वाइकल माइलोपैथी इज एन एडवांस्ड स्टेज ऑफ रेडिकुलोपैथी, जिसमें क्या होता है, लॉस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस. उसमें आपको रेडिएटिंग नमनेस और टिंगलिंग हो रहा था, बट यहाँ पे लॉस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड फंक्शन है. सो दिस इज कॉल्ड एज माइलोपैथी. ये भी एज रिलेटेड डीजनरेशन की वजह से होते हैं, हर्निएशन की वजह से होता है, एंड स्टेनोसिस की वजह से होता है. सो इन दिस एक्सरे वी फाइंड दैट देयर इज अ नॉर्मल एक्सरे एंड देयर इज अ स्टेनोस्ड एक्सरे. स्टेनोस में आप देख सकते हैं कि वर्टेब्रे एकदम एज रिलेटेड डीजनरेशन भी हुआ है, स्टेनोसिंग भी हुआ है एंड हर्निएशन भी हुआ है. तो ये तीनों चीज आपको माइलोपैथी में दिखेंगे, जो कि रेडिकुलोपैथी में नहीं दिखेंगे. आई एम सॉरी इफ आई मे बी गोइंग फास्ट बिकॉज आई नीड टू कवर ऑल द टॉपिक्स इन सर्वाइकल डिसऑर्डर्स. नेक्स्ट पेशेंट आपके जो क्लिनिक में आता है वो है सर्वाइकोजेनिक हेडेक. सर यहाँ पे सर दुख रहा है, ऊपर दुख रहा है, पीछे दुख रहा है, ईयर्स के यहाँ दुख रहा है, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, फ्रंटल एंड mastoid प्रोसेस में होता है. सो इट इज, see, this cervicogenic headache can't be seen in any kind of radiological investigations. तो भी मैंने ये टॉपिक इसीलिए यहाँ पे डाला है बिकॉज उसके पीछे का रूट कॉज वी शुड नो. whether there is stenosis, whether there is degeneration, whether there is arthritis, whatever may be the condition, वो आपको सीटी, एमआरआई या किसी ना किसी कारणवश रूल आउट करना जरूरी है. सो सर्वाइकोजेनिक हेडेक इज ऑल्सो वन ऑफ द डायग्नोसिस. नेक्स्ट है सर्वाइकल फ्रैक्चर. एज यू कैन सी यहाँ पे दिस पेशेंट के एक्सरे में देर इज C4 एंड C5 में देर इज अ फ्रैक्चर, a serious injury which involves in breaking one of the 7 vertical cervical vertebrae. आपके सातों सर्वाइकल वर्टिब्रे में से कहीं पे भी फ्रैक्चर, हेयरलाइन फ्रैक्चर हो, डिसलोकेशन हो, बिकॉज ऑफ ट्रॉमा या कार एक्सीडेंट या फॉल्स, दिस ऑल फ्रैक्चर्स कैन हैपन. सर्वाइकल डिसलोकेशन. Dislocation refers to severe या often traumatic misalignment of the neck vertebrae. जहां आपका नॉर्मल अलाइनमेंट काइपोसिस में होता है, किसी कारणवश अगर वो लॉर्डोसिस शेप या किसी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एज वी कैन सी इन दिस इमेज, पेशेंट का मुंडी ऐसा है, C4 आगे है, C5 नॉर्मल कर्व में है, एंड बाजू वाले एक्सरे में यू कैन सी दैट दिस लोकेशन इज कंप्रेसिंग द स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल रूट नर्व्स. नेक्स्ट इज सर्वाइकल लिम्फ नोड, जिसको हम पॉट्स स्पाइन भी बोलते हैं. ये भी चीज आपको कई बार आपके एक्सरे, एमआरआई या सीटी स्कैन में एक्सीडेंटली फाइंड आउट हो सकता है. क्लिनिकली आपको पैल्पेट करना पड़ता है लिम्फ नोड्स टू सी इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ स्वेलिंग. वाइट, एज वी आर गोइंग इनटू रेडियोलॉजी, तो रेडियोलॉजी में इट इज वेरी हाईली सेंसिटिव, जहां पे आपको मैरो चेंजेस, एनी काइंड ऑफ एब्सेस, लिम्फ नोड स्वेलिंग या तो न्यूरल कंप्रेशन एक्सीडेंटली फाइंडिंग्स में मिल सकता है, या तो आप पर्पसफुली भी, एक टीबी पेशेंट को अगर आपको मिलता है लिम्फ नोड क्लिनिकली पैल्पेबल, तो यू कैन सेंड दिस पेशेंट फॉर रेडियोलॉजिकल टेस्ट. रूमेटॉइड आर्थराइटिस. See, there is synovitis, tenosynovitis and bone marrow edema before any permanent joint destruction. Rheumatoid arthritis सिर्फ आपके स्मॉल जॉइंट्स तक नहीं, वो मेजर जॉइंट्स तक भी जा सकता है. सी यहाँ पे एक पेशेंट का फोटो है बिफोर एंड आफ्टर द थेरेपी. एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस.
बिफोर वाले पिक्चर में यू कैन सी द पेशेंट्स नेक इज टिल्टेड टुवर्ड्स वन साइड बिकॉज क्या होता है कि द स्पाइन there is an inflammation, there is degenerative changes in her spine, and usually it is an autoimmune disorder. Rheumatoid arthritis हुआ, ankylosing spondylitis हुआ, ये एक autoimmune disorder होता है. So you can see after the treatment the patient's neck is absolutely not straight, but there is some relief from that spasm, so her shape is normal. ये बहुत रेयर फाइंडिंग है, कंजेनाइटल है, जहां पे आप बच्चे का ये एक्सरे में आप फाइंड कर सकते हैं कि देयर इज फ्यूजन ऑफ टू सर्वाइकल वर्टिब्रेस, जहां सर्वाइकल वर्टिब्रेस आपके फ्यूज हो गए हो. सो द स्ट्रक्चर इज नॉट नॉर्मल. इमेज हैज बीन टेकन फ्रॉम गूगल. दिस इज ऑल्सो रेयर कंजेनाइटल जहां पे आपको 7 वर्टिब्रास में से जो 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा है, थिंक एनीवन इज टॉकिंग. ओके, जो 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा है, एक एक्स्ट्रा रिब आता है. यूजुअली आपके रिब्स, पेशेंट के रिब्स, सॉरी, इट कम्स आउट ऑफ thoracic T1 T2 T3 T4, बट एक्सीडेंटली इट इज अ वेरी रेयर कंडीशन जहां आपको कंजेनाइटल 7th रिब मिलता है एट द 7th सर्वाइकल वर्टिब्रे करके. I guess we have completed almost all the lectures, and there is a last neoplastic malignancy जहां पे आप पेशेंट के MRI में देख सकते हैं कि there was a rare malignant neoplasm sympathetic nervous system matured है, and there is in the right side you can see a smooth, well defined echogenic white color mass which shows as ganglioneuroblastoma. There are many malignant diseases which out of which I have just mentioned one. I would like to thank my guru Dr. Mahesh Sangvi sir to teach me all these things, to guide me, to teach me how to see these patients, how to clinically examine, what to see the radiology findings. And the next class will be on treatment, which will be dealt by our sir, Dr. Mahesh Sangvi sir. What all treatments we can do? Abhyantar Chikitsa, Bahaya Chikitsa, Panchkarma, Agni Vidya, Marma Chikitsa. All the treatment will be discussed in our future lectures by sir. And if there is any questions, you can put your questions in the chat box. I'll hope sir will take out his time and try to solve as much as questions are there. Yeah, you can share your questions in the chat box. So thank you, Nikhil. It was a very nice, informative. If the people can digest it and put in a practice before you claim anything or you do any treatment. If you have a theoretical knowledge, differential diagnosis, the treatment will be very easy, selection, and you can produce a good result. We always say that none of the technique or none of the procedure is not cannot produce the result. Thing is that you should have a thoroughly knowledge according to Sushruta, Ekamna Shastra Vijayate. Second thing, you should be aware and practically trained for that. Your selection, your instruments, and you are trained for that, and you also aware about anatomy, physiology, differential diagnosis, investigations, and the complication. Then you will be the masters of pain management. Now, sorry, there are some questions by someone. Please stop your mute, everybody. If anyone has their questions, you can put it in the chat box or you can unmute yourself and ask the question directly also. I guess someone's mic is on, so the doctor might have any question. Okay, sir, so there is a question in the chat box which says that POTS spine, PB spine, if it spreads to other part of body. See, if it is in a bone, it's we are localized. So if there is any pot sign, it is been localized only at time.
And nowadays, sports spine is very difficult and very, very rare to see. Before 20 years, it was been very seen usually off and on. But nowadays is almost radically out because the TB has been controlled by the national and international protocol. But it doesn't spread, it is localized. So you should not worry for that. But the diagnosis of what sign, it has been very difficult. Only X-ray is not sufficient. You should have to go for ESR. You should have to go for a gold test. You can go for the CRP. Then and then you can be find it. There is no need of biopsy. So you should have been very aware about before you diagnose this sports sign. And if you have, then I request you to find out this type of activities in the investigation, and then you should have to refer to the any expert orthopedic who can treat the port sign. We cannot treat it because it's a tuberculosis. What dose, how much, and everything it will be decided by them. Or, or otherwise, you should put it with the investigation. It's a port sign. Then you can use the protocol as per the international standard WHO. Thank you very much. Thank you so much, sir. So there is a next question by Dr. Dev. Dr. Dev has a question that cervical myelopathy mein the treatment shear basti, is it a good option? I actually appreciate about every time about the busty, but the busty will take a long time. And first, we are working here to how to reduce the pain. So, Shir Basti is very good, but before that, there is a lot of procedures you have to complete it, and then you should supplementary treatment is a Shir Basti because here not only the what other ligaments, nervous systems, and bone are involved. So first you relieve them, patient will be happy. Then you go for the internal treatment. At that time, Sirvasti is very good. In spite of that, when there is a pain, you can do a Patrapind swab or otherwise anything, which can give you the anti-inflammatory and pain relief that is better. Yes, sir. The answer was very well justified, as we can say. सर ने जैसे बताया अभी कि माइलोपैथी एक एनाटॉमिकल चेंज है, तो हमको पहले एनाटॉमिकल चेंज का प्राइमरी ट्रीटमेंट करना है एंड शीर बस्ती इज अ सेकेंडरी ट्रीटमेंट जैसे सर ने अभी बताया है. सो फोकस ऑन द प्राइमरी ट्रीटमेंट फर्स्ट, देन गो फॉर द शीर बस्ती. So there is another question by Dr. Manesh. How many duration we should put this neck belt for better relief अगर patient को है तो? See, in my practice, I never advise the belt for this neck. But if there is a fracture or post-operative, the nerve compression is there, it is a better answer. Otherwise, with the karma and agni karma, routinely reduce the pain, reduce the spasm, and even though number of the patients in hospital we have tried that after one sitting, patient has thrown out the neck belt. It's the indication where you want to not compression permanently. At that time, neck belt is the only the tool to relieve the pain and reduce the pain and reduce the trauma of the anatomical structure. सर अगर बेल्ट दे पेशेंट्स को तो कौन से पेशेंट्स, अगर जनरल पेशेंट्स को नेक पेन है, नेक स्पाज्म है या ऐसा कुछ है तो डेली बेसिस पे दे सकते हैं? Every time that you have, even though in the fourth moment, for routinely morning क्रिया करते समय वो निकाल देना, बाकी नींद में और दिन में काम में दोनों समय उसको लगाना चाहिए, क्योंकि if there is a pressure on the nervous systems or PID, it will be painful and it cause more trauma to the the samprapti. So at that time that is very good. But when you after the treatment pain is relieved, patient don't need the neck belt. Thank you so much, sir. Shall we move to the next question, sir? Yes. Very good question by Dr. Rahul. A patient with chronic neck and frozen shoulder, range of movement बहुत ही खराब है, तो उसके लिए how will we diagnose that patient and what will be the line of treatment? If patient you should have to rule out very good question. First thing you should have a very good X-ray of the neck as well as the shoulder. If it is required, then you have
you know the MRI of this. Otherwise, the best treatment is either Agni Karma or Vita Karma. And both the way you should have to treat cervical spine and also a frozen shoulder. Okay. And it should be diagnosed by the clinically as well as the radiologically. I said that you should have to go for a best is MRI. Yes, sir. सर हाउ टू डिसाइड कि पेशेंट्स को बेल्ट की जरूरत है कि अग्निविद्या कर्म करके मसल रिलीफ एंड टेंशन और स्पाज्म रिलीज करना चाहिए कि इंटरनल मेडिसिन या पंचकर्मा से ठीक हो सकता है, वो कैसे डिसाइड करेंगे? See, I have already explained in previous answer that when there is a need to do not compress on the cervical spine, muscles, nerves, and disc. At that time, you should be very happy to give a belt long time permanently. Yes. But if it is not severe and you are improved with this Agni Karma, Vidya Karma, internal medicine, or Bahya Panch Karma that I have said, Patra Putli Swan, with this, you know, the any Nigrodadi Gana, or you can have an Arka Patra, etc. Then there is no need of the belt. But patient mentally, physically, or is required by the physiology, then neck belt should be continued. यस सर, वेल स्पोकन एंड आई थिंक आपके आंसर्स को देख के ऐसा लग रहा है कि और ट्रीटमेंट जाने की इच्छा जग रही है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस पेशेंट्स पे कैसे करना चाहिए. वी आर वेटिंग ईगरली फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, ट्रीटमेंट, what to do and how to do. Thank you so much, sir. If there is any questions, you can put your questions last minute. I guess all the questions have been. एक minute. Okay, Dr. Akash has a question. See, your question is which type of cervical spine disease could cause nerve pain radiating to hand? It is called as radiculopathy or advanced stage में myelopathy. As if you might have heard the lecture, you might have got your answer itself. And radiating pain यही दो चीज में होता है mostly. But अगर anatomical changes है, I would like sir's experience. What sir has to share? See, when there is a no. So diagnosis has been clear, investigation has been very clear, but it should be below C5, C6, C7. If you understand the nervous system of anatomically, then it has been very easy to do this one. So when you are have a permanent, temporary, or in a particular angle, patient will get a pain. You should have to very clarified. And at that time, before you do anything, you have to reduce the pain. Sometimes the tractions of the cervical spine will give a lot of good result also. So it should be, I think so. The whole answer will be decided in the next lecture. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. What is the last question? Yes, sir. Okay. Okay. It is for the extension of the same question and which only cause only neck pain करके. Okay. So we have a next question by Dr. Rahul. Can we give with or Agni Karma in this condition? In which condition? 1 minute. This chronic neck pain with frozen shoulder. क्या with the Agni देख सकते हैं? Definitely, if it is diabetic, I think so you should be very assured about the Vita Karma. If it is not diabetic, you can use the Agni Karma and Vita Karma also. And the thing is that when you do the Vita Karma, ask the patient, the bleeding stop immediately, not take a long time. If it is there, then you have to advise the patient to go for a BTCT PT. Thank you so much, sir. Last line I would like to say, Dr. Akash, ki you have to ask the patient to get a X-ray to confirm कि हाँ there is any nerve involvement, nerve root compression है. Based on that reporting, it will be written there कि spondylosis है, जिसकी वजह से radiculopathy या myelopathy हो सकता है. The patient if he comes with three things: numbness, tingling या pain, radiating pain,
तो आप समझ सकते हैं कि इसमें नर्व इन्वॉल्व है। सिर्फ ये 3 कंप्लेंट्स, अगेन आई रिपीट, नमनेस, टिंगलिंग या रेडिएटिंग पेन, अगर आपको पेशेंट इसमें से कंप्लेन करता है, so there will be a nerve involvement in that cervical spine diseases. Any other questions? Okay, thank you so much, Dr. Akash, Dr. Rahul, and everyone for joining this session. Hope to see you this Friday on our treatment lecture on cervical disorders. Thank you so much for joining. If any questions, you can put your questions on this email, or you can message on this number. You will get a very good guide from sir. And sir has got an appreciation. Thank you so much, sir, for your guide. It is very valuable. Thank you so much, sir. Thank you very much. Shubhratri, Sabha Khair, Sukhayu Bhava. Thank you. Thank you. And a very good explanation by the Nikhil. You should all have to appreciate this. That guy take a lot of pain for you. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Good night. Hope to see you.